Students, force acting on a charge. Force acting on a charge moving with a velocity v in an external magnetic field B is given by the formula V is equal to QV. We consider that is V bar cross V bar. That's a cross product. If I happen to write it in terms of magnitude, then QBB sine theta, students. Agreed? If I happen to consider the path, okay, the path of this particular, okay, if I happen to go for a path of this particular into an external magnetic field, then path I can consider, students, can be considered as circular. I made this also very, very clear, students. Path is circular. फिर इसी को अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स करंट का फॉर्मूला लेते हुए प्लीज I is equal to Q by T, students. Okay, and distance upon time I'll consider as, sorry, velocity upon time I'll consider in terms of distance we consider V into T. Okay, अगर मैं multiply करता हूँ तो I can get the formula F is equal to B I L sine theta, students. That's a force acting on a current carrying conductor, students. ये है formula for force acting on a current carrying conductor. How do I get it, students? यहाँ से ये formula आ रहा है. एक शॉर्ट में मैं इसका डेरिवेशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. इन शॉर्ट ध्यान से सुनना. F is equal to Q V B we consider sine theta. This is in magnitude. Students, what exactly current is defined as? A rate of flow of electric charge, students. I is equal to Q by T. So instead of Q, students, can I put I into T into V into B sine theta? Agreed? What is V over here? So that's a velocity of the charge. What does T stands for? Time taken. If I say a charge, that's just students, a charge is moving with a velocity V. And this charge covers a distance L in time T. Students, charge is moving with a velocity V. It covers the distance L in time T, students. Then what exactly V into T I can consider? V into T. So what do you say? So speed is equal to distance upon time. What is V into T? L. So can I substitute this as I into L into B sine theta? Agree? तभी जाके मैंने क्या लिखा? Bill sine theta. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Okay. If I want to write it in vector form in this case, then what should I consider? I'll consider I into bracket what? It's L bar cross B bar, students. Okay. ये है V cross B, ये है L cross B. ये भी न्यूटन में होगा, ये भी न्यूटन में होगा. सर हाँ बोलो. सर जब हम लोग ने कन्वर्ट किया वेक्टर फॉर्म में, so how we will know that it is B cross L and not L cross B? मतलब कौन पहले आएगा वो, how we will know? My dear, when I speak about velocity, students, what is velocity? Velocity is considered to be what? It's a distance covered. It's a distance covered per unit time, dl by dt. या L by T, तो V के जगह पे L आएगा ना? Okay. And what exactly charge upon time will be current? अच्छा, okay sir. Agreed? Is that clear? समझ में आया? हाँ, और सर तो फिर इसमें तो पता चल गया, बट जो ओरिजिनल फॉर्म है V क्रॉस B, तो उसमें V पहले आया ना, so how we will know? Speed is equal to distance. अरे तो speed को तो distance upon time लिखना. L time is a scalar quantity, my dear. Okay sir, समझा. Charge upon time is current. Okay. Okay. Yes, All right. हाँ sir. Okay. So I into L cross B we consider, and that's the formula we consider. Is that clear? That's a formula for force acting on a current carrying conductor. Okay. Then suppose if I happen to consider your direction of force. Students, direction of force can be found out by using Fleming's left hand rule. It is what formula, students? Fleming's left hand rule, students. Index finger, second finger, and thumb, students. Your index finger speaks about direction of magnetic field, students. Second finger speaks about direction of current, conventional current. Your thumb speaks about direction of force. And तुम्हें direction of magnetic field दिया हुआ है, direction of conventional current तुम्हें पता है, तुम्हें क्या find out करना है? Force.
and that force can be represented by thumb. Agreed? That's what he considers your Fleming's left triangle, students, to understand this part. Is this clear to all of your students? Yes, sir. Yes, sir. Now let us understand, students, how exactly we can find out a torque acting force. Okay, torque acting on an external dipole we consider, students. That is torque acting on an armature coil we consider by simply using your Fleming's rules. Okay, you'll be finding out that part of it, students. Okay, so please pay attention. In order to get the formula for force acting, students, the answer is formula for force is I into L into B. Agar suppose यही चीज, if I happen to consider in case of a galvanometer, okay, that is a current loop if I consider, and this part is used in a galvanometer, means इसका application कहाँ पे use होगा? Then simply one can say its application is considered to be what? Its application is used in either a DC motor, or you can consider is used in working of a galvanometer. Students, concept of galvanometer already I told you. Have you come across galvanometer earlier, students? क्या मैंने बताया galvanometer के बारे में, students? Students, did I tell you about galvanometer any times, anywhere else, in any of the topics in physics? Do you remember, recollect? Any one of y'all? Absolutely correct, Shania. I told in current electricity, students. करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने गैलोनमीटर का कंसेप्ट दिया था, देन उसके बाद में हम लोग ने एम्मीटर पढ़ा, वोल्ट मीटर पढ़ा, शंट के बारे में पढ़ा, हाई रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, और दो फॉर्मूलाज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स. कैन एनीबॉडी गिव मी द फॉर्मूला? चलो, एनीबॉडी कैन गिव मी द फॉर्मूला फॉर शंट. A low resistance connected in parallel to form an ammeter. Fast, unmute yourself, don't post your answer, unmute. शंट का कोई फॉर्मूला बोल सकता है? Yes, John, we did it in current electricity only. शंट का फॉर्मूला कोई बोल सकता है स्टूडेंट्स, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था? हाँ स्टूडेंट्स, see, taking so much of time. Students, shunt is given by the formula G upon N minus 1. Shunt is a low resistance connected in parallel. It is G, it's a galvanometer resistance upon N. N is the fraction of the total current in the galvanometer. So I upon IG minus 1. वही अगर मैं हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेता हूँ स्टूडेंट्स, कैपिटल R इज इक्वल टू G इनटू ब्रैकेट N minus 1. वो किसके लिए यूज किया था? वोल्ट मीटर में यूज किया था. स्टूडेंट्स कुछ याद आ रहा है? शंट इज G upon N minus 1. कैपिटल R is equal to G into N minus 1. What does N over here in ammeter stands for? ये बहुत important problems है students. What does N over here stands for? The fraction of the total current into the galvanometer we consider, students. And what exactly N in voltmeter will be the fraction of the voltmeter. Please, students, when you're doing current electricity also with either Somsar or Hemant, students, do take care about all these things. You will come across as you move further ahead. लेकिन इनका working कैसे होता है, students? Galvanometer का working, DC motor का working will be simply due to what? Due to the torque, because it undergoes rotational motion. अभी a simple example of a motor, हम motor के बारे में बात कर रहे हैं students. अगर मैं एक simple diagram दूं students motor का, तो how exactly motor looks like? Students, अगर मैं motor का diagram दूं students, what exactly? This is what I can consider simple kind of a motor. This is what an armature coil is. ये सोचो कि ये है A, B, C, D. This is what an armature coil is. Agree? यहाँ पे तुम्हारे magnets होते हैं. कौन से magnets मैंने लिया है? North और South. Field magnets जिसको बोलते हैं. Horseshoe shape magnets बोलते हैं. Horseshoe shape से होगा क्या? So field और नजदीक आएगी, parallel होगी, strong होगी. देखो magnetic field कहाँ से कहाँ जाती है? North to South जाती है. Agreed? Please concentrate very properly. ये तुम्हारा एक armature coil है students, और ये armature coil को मैं connect करता हूँ to rings. Please, motor. ये ring है, इसको हम क्या नाम देते हैं? We call this as split rings, students. These are called as split rings we consider. Commutator split rings we consider. Is that clear? तो यहाँ पे तुम्हारा ये split rings है. अगर मैं देखता हूँ ये S1 किससे बना हुआ है? ये कॉपर से बना हुआ है. कॉपर से बना हुआ है.
इसके नीचे फिर मैं क्या रखूंगा, आई एम गिविंग यू कॉन्टैक्ट ऑफ कार्बन ब्रश, यानी these are thread like fibers of carbon which are good conductor of electricity. Students, the only non-metal which is a good conductor of electricity, carbon. यानी students ये जो split rings है ना कॉपर के वो सिर्फ रोटेट होंगे। ये जो ब्रशेस है B1 B2 दे आर ऑलवेज एट रेस्ट, वो मूव नहीं होते। स्टूडेंट्स ब्रशेस कभी भी मूव नहीं होंगे। ये एंड को कहां पे कनेक्ट करूंगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये एंड में पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता हूँ, ये एंड नेगेटिव टर्मिनल, आ गया मेरा की और ये हुआ मेरा रियोस्टेट। दिस इज ई के आर एच, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सल। ये हुआ तुम्हारा डायग्राम फॉर डीसी मोटर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। डायग्राम क्लियर? अभी देखो वापस में बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो मैकेनिज्म है ना स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट ट्राई टू थिंक इट्स टू ट्रिकी और टफ। ये जो डीसी मोटर ये है क्या कंसेप्ट स्टूडेंट्स, ये सिंपल मैंने बना दिया है तुम्हारा सीलिंग फैन का मोटर। इसी को अगर सपोज अगर वो मोटर को मैं थोड़ा सा लाइट बना दूं, स्टार्ट ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर यही मोटर को मैं नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दूं, थोड़ा सा छोटा सा बना दूं, कॉम्पैक्ट बना दूं, तो वो हो जाएगा मेरा सीडी प्लेयर। स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? वो भी एक मोटर है। अगर इसी को थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा हैवी बना दूं, हैवी मैग्नेट्स लेके हायर पार्ट ऑफ इट, और उसको मैं डाल देता हूँ मेरा वॉशिंग मशीन के अंदर, तो होगा ड्रम्स के अंदर जो स्पिन होता है, वो वाला कंसेप्ट। स्टूडेंट्स दिस इज सिंपली टू रोटेट, दिस इज सिंपली टू रोटेट वी कंसीडर। यानी होता क्या मालूम है, इस एक्सेल के ऊपर, ये जो एक्सेल है ना स्टूडेंट्स, ये एक्सेल के ऊपर ये एक ऐसा मेटालिक चेंबर होता है स्टूडेंट्स, एक मेटालिक पीस होता है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये मेटालिक पीस के ऊपर ये तुम्हारा आर्मेचर कॉइल होता है। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, अगर तुम डायग्राम को समझना चाहो अच्छी तरह तो ये है ऐसे डायग्राम है स्टूडेंट्स। ये जो रेड कलर का है वो वायर है, कॉपर वायर है। ये जो मेटालिक पीस है उसके अंदर एक एक्सेल होता है और फिर ये तुम्हारे ब्लेड्स होते हैं, भले वो मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड्स हो, या तुम्हारा सीडी प्लेयर का ब्लेड्स हो, या तुम्हारा वॉशिंग मशीन के हो। यानी हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, ये जो वायर है इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। Students, the wires are experiencing force. This part of the wire will experience force. This part will experience force. और उसकी वजह से होगा क्या, बॉडी टर्न होगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जैसे बॉडी टर्न होगा, जैसे बॉडी टर्न होगा, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम भी टर्न होगा। अगर ये टर्न होगा तो ये जो रॉड है, एक्सेल है, वो भी रोटेट होगा। वो रोटेट होगा तो द ब्लेड स्टार्ट्स रोटेटिंग। यानी स्टूडेंट्स डीसी मोटर या गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, it's electrical energy converted to mechanical energy. Students, listen carefully. Electrical energy getting converted to mechanical energy. That means your direct current, which is in form of electrical energy, is getting converted in the form of rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy. Is this clear to all of you all? What are we studying further? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Now let us understand this कि अभी ये टर्निंग इफेक्ट कैसे होगा। ध्यान से सुनना, टर्निंग इफेक्ट कैसे होगा। तो तुरंत कुछ स्टूडेंट्स वाइज और स्मार्ट होकर बोला, अरे सर टर्निंग इफेक्ट तो आपने सामने फॉर्मूला डाल दिया है। सर there is couple, the net force is zero. Hello students, there are two forces equal in magnitude, opposite in direction, the resultant sum can be considered to be zero, but there is net torque acting onto it, there is net couple acting onto it. Couple का मतलब क्या स्टूडेंट्स, what is couple? Two forces equal in magnitude, opposite in direction. What is the formula for couple? You must have done in rotation dynamics. Rotation motion हो चुका है तुम्हारा। तो अगर मैं पूछूं कपल का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला विल बी वन फोर्स इनटू कपल आर्म। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला दूं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स अप्लाइड, ये होगा मोमेंट आर्म। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज कपल, तो कपल को कैसे डिनोट करोगे, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क को नाम देते हैं कपल, उसका कोई सिंबल नहीं है, नेट टॉर्क को नाम देते हैं कपल। व्हाट इज दैट, it's a product of moment arm. You can consider the moment arm to be what, length kb into force. ये भी न्यूटन मीटर है, ये भी न्यूटन मीटर, लेकिन ये कौन सा आर्म हो गया, ये कपल आर्म हुआ। यहाँ पे हम कपल आर्म की बात करेंगे, ना कि मोमेंट आर्म।
यहाँ पे हम कपल आर्म के बारे में बात करेंगे, ना कि मोमेंट आर्म। ना अ स्टूडेंट हु इज लिसनिंग टू मी विल से सर ये कपल आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म तो टर्निंग आर्म होता है। यानी ध्यान से सुनना, मोमेंट आर्म का मतलब क्या, अगर कोई चीज को तुम रोटेट करते हो तो ध्यान से सुनना, मोमेंट आर्म इज एक्चुअली द distance between point of application of force and the turning point. Please make it very very clear students. The word moment of force के अंदर moment arm into force, so moment arm का मतलब turning arm, turning arm का मतलब distance between force and point of rotation, point of revolution, pivoted end, turning point. But what is couple arm? Is your couple arm and moment arm the same? No, not at all. Couple arm students is actually distance between two forces. The line joining the two forces. For example, if you have a steering wheel of a car, students, अगर तुम्हारे हाथ में steering wheel of a car है, ये पूरा wheel है, तुम गाड़ी चला रहे हो, तो एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, two forces equal in magnitude, opposite in direction, तो उनके बीच में जो rod connect होती है, that is what is called as your couple arm. तो couple arm का मतलब पता चल गया? Distance between two force. Hello, distance between two force. और moment arm का मतलब distance between force and turning. क्या ये क्लियर हुआ between what is moment and what is couple? यानी before going further ahead, students को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे couple होगा. There will be couple. There will be total moment of force. Now let us understand. Sir, so Yeah. whenever they said calculate the net torque, so we have to consider the couple arm. No? Yes, you have to consider the couple arm in that case. Okay. Distance between two forces we consider. Okay. Net torque is not equal to 0, but net force can be considered to be equal to 0. ये शायद MCQ भी होगा तुम्हारे लिए, जो भी तुम्हें चैप्टर करोगे आगे. Okay, अभी ध्यान से सुनना. Okay, students, now let's get it. Now let us understand the working of a simple DC motor. Students, ये अभी ये तुम्हारा क्या है, सिंपल काइंड ऑफ पंखा है. सोचो ये पंखा है, यहाँ पे ये सोचो कि ब्लेड्स लगाए हुए हैं. स्टूडेंट्स, ब्लेड्स लगाए हुए हैं और पंखा घूम रहा है. ये क्या है तुम्हारा रियोस्टेट रेगुलेटर. स्टूडेंट्स, ये रेगुलेटर है. तुमने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हो रहा है. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. सपोज अगर तुमने रेगुलेटर यहाँ पे रखा, उसका मतलब क्या हुआ, यू हैव इंक्रीज रेजिस्टेंस. हेलो, तो यहाँ से करंट कम जाएगा मोटर में. अगर करंट कम गया, अगर करंट कम गया, अगर करंट कम गया, तो देयर विल बी लेस फोर्स एक्टिंग ऑन टू द आर्म्स. अगर फोर्स कम गया, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, टॉर्क भी कम हो जाएगा. तो विल द ब्लेड्स मूव फास्टर और स्लोअर? द ब्लेड्स आर गोइंग टू गो स्लोअर. ये है फंक्शन ऑफ रियोस्टेट. अगर वही रियोस्टेट को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ, अरे सर रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी आपने किया क्या, रेगुलेटर होगा था ना, फैन रेगुलेटर, वो 5 पे रख दिया है. जैसे तुम्हारा रेगुलेटर 5 पे तुमने रख दिया, तो क्या होगा, ज्यादा करंट जाएगा. ज्यादा करंट जाएगा तो नेट फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, टर्निंग इफेक्ट और फास्टर होगा. Is this clear? Purpose of using this is just to have a controlled current flowing into the device, into the motor. एक कंट्रोल करंट है. और ये करंट को कॉन्टैक्ट में कौन ला रहा है, B1 and S1, B2 and S2. What are S1 and S2? These are copper rings only. बीच में से तोड़ दिया मैंने, so they are called as half rings. Rings go on rotating, but over here B1 and B2 are always at rest. Agreed? These are carbon brushes. Now let us understand what kind of supply is this. So this is the direct current. Direct current. That's why it's electrical energy to mechanical energy. अभी देखो हो क्या रहा है यहाँ पे? What is happening over here? ध्यान से देखो students. हाँ sir, current यहाँ पे आ रहा है. Current यहाँ पे आया. यहाँ से S1 में गया. Please pay attention. Look at the reading. Current यहाँ से गया. Current यहाँ से S1 में गया. S1 से यहाँ पे गया. Copper wire के गया, which is made to move around. This copper wire is going to move around the iron armature. तो ये यहाँ पे गया A to B, B to C, C to D. यहाँ पे आया करंट, वापस S2 पे गया, S2 से B2 गया, B2 से यहाँ पे आया, सर्किट कंप्लीट हुआ. क्या ये क्लियर हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट स्ट्रेट्स?
Is that clear, students? Now can you tell me, students, which arm of the armature coil? Listen carefully, students. My armature coil is A, B, C, D. Now it has 4 arms. Arm AB, arm BC, arm CD and arm DA. मुझे बताओ ये कौन से आर्म में तुम्हें फोर्स मिल सकता है? क्या सारूफ, in all the arms will there be force acting? अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? For armature ABCD, I have 4 arms, students. ये 4 arms, ये number of turns है students. ये जो कॉपर वायर है मैं वाइंड कर रहा हूँ. Everybody वापस सुनो ध्यान से. Suppose अगर मैंने ये कॉपर वायर वाउंड किया, if I just go for 50 turns, तो मेरा छोटा सा CD प्लेयर हो गया. CD डालते हो ना म्यूजिक सुनने के लिए, वो वाला CD प्लेयर हो गया. अगर यही नंबर ऑफ टर्न्स में और बढ़ा देता हूँ तो मेरा मिक्सर ग्राइंडर हो गया. वही नंबर ऑफ टर्न्स को मैं और बढ़ा देता हूँ तो एग्जैक्टली इट कैन बी अ सीलिंग फैन. वही नंबर ऑफ टर्न्स और हैवी मैग्नेट मिल रहा है तो वो मेरा वॉशिंग मशीन का ड्रम. यानी आई कैन गेट मोटर ऑफ डिफरेंट पावर्स. स्टूडेंट्स, मोटर आई कैन गेट इट ऑफ डिफरेंट पावर्स और डिफरेंट इलेक्ट्रिक पावर. कंजम्पशन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड होता है. नाउ माय क्वेश्चन टू यू, अगर मैंने कोई ऐसा मोटर दिया है तो करंट इज फ्लोइंग ओवर हियर, which arm experiences 4? Do all 4 experiences or any one experience or any 3 experiences? Can you give an answer to this? Any two. Students, is the question clear to all of you all? Question clear हुआ students? Yes. Students, is the question clear to all of you all? Okay, Kunal has put forward his answer. Hitanshu says yes. Kunal ने तो आंसर दे दिया. Hitanshu, question clear है तो क्या आंसर डालो. Okay, Kunal, can you tell me which arm experiences the force? Sanya is also. Sanya, can you give the which arm experiences force and why? Hitanshu is given one arm. Sure, Sanya, that is to find out direction of force. But I want to know which arm experiences force. Will it be AB? Will it be BC? Will it be CD? Will it be DA? Kunal has given the correct answer. Sanya has also given the correct answer. Very good. Kunal has given the correct answer. Sanya has given the correct answer. Hitanshu is given for one arm. Chirag. No, my dear Chirag. गलत जा रहा है तू. चिराग थोड़ा सा सोचना, ये सामने मैंने लिया है. हाँ, मैंने आंसर यही दिया है, देखो ना. चिराग देखो, मुझे बताओ फोर्स किसको ज्यादा लगेगा? चिराग फोर्स किसको ज्यादा लगेगा? जब भी L क्रॉस B है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब व्हाट इज अ कंपोनेंट हो भैया? चिराग व्हाट इज अ कंपोनेंट हो भैया? हितांशु ध्यान पे ध्यान दे. व्हाट इज अ कंपोनेंट यूज हो भैया L क्रॉस B में? हाँ चिराग, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, so what's a component? चिराग क्रॉस प्रोडक्ट में व्हाट इज अ कंपोनेंट यूज? डॉट प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? डॉट प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? कॉस थीटा या साइन थीटा? तो यहाँ पे कौन सा होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट साइन. यहाँ पे कौन सा होगा? क्रॉस हो गया या साइन? साइन थीटा. ओके, प्लीज यहाँ पे साइन थीटा होगा. अब यहाँ पे देखो लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स.
When exactly force is maximum, students? When exactly force is maximum? When theta is 90. Students, when theta is 90. यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 होता है, स्टूडेंट्स ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इनके बीच में 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। देखो अभी यहाँ पे, प्लीज स्टूडेंट्स, इज दिस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर? हाँ सर। इज दिस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? यस सर, इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इज दिस एंगल 90? यस सर। सो विल AB experience force? Yes. Now check out for BC. Is this the length of the conductor? Yes. Is the current going from B to C? Yes. Look at the magnetic field. Is the length and the magnetic field, are they perpendicular or parallel? Is BC perpendicular or parallel? Huh, students? Is BC perpendicular to magnetic field or parallel to magnetic field? Parallel. Parallel. So theta क्या बन जाएगा? 0. So there is no force on BC. This is how you have to understand, students. वैसे ही बोलो CD के लिए कैसे जा रहा है? हाँ सर, ये हो तुम्हारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, करंट डीसी की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल जा रहा है, सर इसको भी फोर्स लगेगा। एग्रीड? परपेंडिकुलर है। व्हाट अबाउट DA? सर DA के अंदर लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं लेंथ D2A लेता हूँ और या करंट को देखता हूँ तो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है। लेंथ को भी ध्यान से सुनना, लेंथ यहाँ से B to C ले रहा हूँ और यहाँ पे D2A, तो ये पैरेलल लेंथ हुआ, ये एंटी पैरेलल भी ले सकता हूँ मैं। एंटी पैरेलल तो थीटा कितना होगा? 180। व्हाट इज साइन ऑफ 180 स्टूडेंट्स? 0। तो ये भी तो नो फोर्स। एंड व्हाई एम आई गोइंग फॉर साइन स्टूडेंट्स? बिकॉज़ इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। योर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो F इज इक्वल टू, देखो ये वाला लिखा ना, ILB sin 90, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। Is this clear, students? Yes, sir. So now which arm will experience maximum force? AB and CD will experience maximum force. Agreed? Now can you tell me what is the direction of force? So we got the magnitude. Can you find the direction? Of course by Fleming's left hand rule. And Sanya had given the answer also. मुझे बताओ AB किस तरफ जाएगा, CD किस तरफ जाएगा? Students, can you tell me that? AB को force किस तरफ लगेगा? Students, can you tell me? CD को force किस तरफ लगेगा? Can you tell me that, students? Now see, Fleming's left hand rule, students. Everybody keep your left hand in this manner, students. Look at the magnetic field, students. How is the magnetic field? It's in this direction. I'll change my position. Students, magnetic field इस तरफ जा रहा है। देखो मेरा first finger, ये magnetic field. Left hand use करो, students. My first finger is in this manner. Current कहाँ से जा रहा है? Students, current is from going from A to B. Agreed? So see, this is what the field is. Current, ये current का direction, ये conventional current का direction. Students, conventional. Conventional current नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ है. So see, और देखो, ये है field दिखा रहा है. There is a force acting. Thumb किस तरफ जा रहा है? Where is my thumb going? My thumb is going into the whiteboard. यानी स्टूडेंट्स, ये जो AB है, करंट कैरिंग कंडक्टर, AB किस तरफ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। फ्रेंड्स, AB अंदर जाएगा। अगर AB अंदर जा रहा है तो बट ऑफ कोर्स CD बाहर ही आएगा ना, क्योंकि फोर्स किसको लग रहा है? AB और CD को। स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज AB and this part is CD. If AB goes in, CD will come out. Can I say this is a line joining both of these particular points? Suppose अगर मैं point X लेता हूँ, मैं point Y लेता हूँ, तो can I say these are two forces equal in magnitude, opposite in direction? Agreed? What exactly body will undergo? Rotational motion. Is this a couple? This is a couple. Yes. Two forces equal in magnitude, opposite in direction, students. Equal in magnitude, opposite in direction results in couple. Agreed? यानी देखो AB किस तरफ जाएगा? AB अंदर की तरफ जाएगा। वापस दिखा रहा हूँ Fleming's left hand rule, students. अर्शिता, समझ में आ रहा है अर्शिता? ये मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. करंट ऊपर की तरफ गया, फोर्स अंदर गया। एग्रीड? तो फोर्स अंदर गया,
यहाँ पे देखो, look over here, see the magnetic field, see the current is downwards, the force is outwards. Agreed. So this is going to go in, this is going to come out. Is it going to rotate? Yes. What kind of motion is that we call? Rotation motion. Agreed, students? Yes. What's the formula for net torque? Students, formula for net torque will be equal to what? Formula for net torque will be equal to what? So distance between the two forces. अगर suppose मैंने length को ये दिया, answer the length of the conductor is L. Let us say the breadth of the conductor is B. Everybody listen carefully, students. What exactly the formula for couple is? Students, what's the formula for couple is? Couple is net torque. Formula for couple is what? Product of any one force into what? Moment arm or couple arm? Moment arm या यहाँ पे मैं couple arm Couple लूँगा? Couple arm. Couple arm का मतलब क्या है? Distance between two forces. Can I say ये होगा distance और ये distance क्या है? B. So can I put into B? क्या ये clear हुआ students? F को कैसे लिखूंगा? सिर्फ F का फॉर्मूला क्या है? सिर्फ F का फॉर्मूला है BIL sin theta into small b. L क्या है? Length of conductor. B क्या है? Distance between two forces. Students, what is length into breadth? Students, what is length into breadth? What is length into breadth? What is length into breadth? Face area. क्या है? Face area of coil. So can I say the net torque or couple is equal to N into I into A into B into sin theta. Students, what does A stands for? A stands for area. What is area? Area is length into breadth. So look, what's the formula for net couple? NIAB sin theta. Look over here. Am I getting this formula? हाँ sir. I है. हाँ sir. I है. Is length into breadth is area? Yes sir. Is B there? Yes. Is sin theta there? Yes. What does N stands for? N stands for number of turns. मैंने क्या बोला था? जब भी कोई ये मोटर बनाएगा स्टूडेंट्स, तो उसको 20 टर्न्स देगा, कोई 500 टर्न्स देगा, कोई 5000 टर्न्स देगा. So can I say number of turns into current into what? Face area of the coil into external magnetic field and theta. Theta is what now? Theta over here is what? What is theta? Do you see anywhere L? No. Now you can say theta is the direction of the angle between current and external magnetic field. Angle between current and external magnetic field. If theta is 90, couple is maximum. The body will undergo rotational motion. What is the unit of this? So this unit is Newton meter. क्या ये clear हुआ students? This is a very important formula, students. So to students, when somebody asks you what exactly the total moment of force or the net couple acting onto a armature coil, then your formula is equal to NIAB sin theta. What does N over here stands for? Number of turns. What does I stands for? Magnitude of current flowing through the armature coil. What does A stands for? Face area of the coil. What does B stands for? External magnetic field. What does theta over here stands for? Theta is the direction of current in the external magnetic field. Answer will be Newton meter, and the body will undergo turning effect, rotational motion. Is this clear? Okay, can I erase this now? Because I have to go for galvanometer. Can I erase this, students? Erase कर दूं, students? तो इसके साथ में अभी तुम्हें और एक फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. The net torque acting is NIAB sin theta.
Right now, students, if in case if I happen to consider, this is for your DC motor concept, electrical to mechanical. Now I'll go for galvanometer. How do exactly it works accordingly? Same mathematical relation. Okay. Forty-one students have got 100% JEE Mains. It's only the top list has been declared. 8 students are sharing the, and mostly the, and still I'm not sure with the cutout. The answer सुनो students. शायद ये सुनने में आया cutout for JEE Advanced will be this time 93 percentile. 93 percentile for general category. सोचो स्केल को बढ़ा दिया. शायद number of applicants कम हो गए. Number of applicants बहुत कम आ गए. Because the total number of applicants was just, it seems, 9.5 lakh. Yes, sir. Out of 9.5 lakh, it's around 2.5 lakhs will be going further. I don't know which 2.5 lakhs. Those who are scoring 93 percentile and above. This is the first time in the entire JEE Mains the cutout have raised like anything. And he had होता है 89 होता है 90 तक पहुंचा नहीं शायद 89, 88, 89, 90 तक तो यानी किसी भी हाल में students अगर तुम एडवांस के हिसाब से जाते हो, then students your thought process should not be below 99%. Below 99. CET का तो स्टूडेंट्स अजीब ही है. CET का तो आज आया एडमिट कार्ड आ गया स्टूडेंट्स आज, लेकिन CET आई फील लाइक दैट समथिंग इज गोइंग फिशी, क्योंकि CET का जानबूझ के वो डिले कर रहे हैं. एंड द एग्जाम शेड्यूल क्या किया उन्होंने मालूम है? इट्स गोइंग वेरी क्लोज टू द एडवांस पार्ट ऑफ इट. एडवांस थर्ड का है और CET की जितनी भी एग्जाम्स हो रही है वो 20 और 27 के बीच में हो रही है स्टूडेंट्स. और शायद तब तक मुझे आई फील इट इन दैट मैनर, आई एम फीलिंग इन दिस वे कि somewhere or the other Maharashtra State Board is trying to work out with, they must be having the data. They must be having the data of the students who are scoring 99 percentile or 95 percentile and above. वो भी CET के लिए अप्रोच कर रहा है, लेकिन शायद उनका सेंटर्स बहुत लंबा दे दिया है. फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जहाँ पे मैंने सुना करके उनका परसेंटाइल अच्छा है, काफी अच्छा परसेंटाइल है, they are staying in west of Mumbai, उनको दे दिया वाशी, खारगर, और वहाँ के जो अच्छे परसेंटाइल उनको डाल दिया यहाँ पे बैंड्रा. यानी जर्नी का ही ट्रैवल इज 1.5 or 2 hours का तो जर्नी है. Something is going on fishy in that case. Something is going on. You can CET के admit cards also out students. CET is between 20th and ये 20th और 27th के बीच में students सारी dates शायद. Around 19th और 27th के बीच 26th के बीच में सारी CET की exams हो जाएंगी. Let's hope. Okay students. लेकिन अभी ये 2021 की बात कर रहा हूँ सोहम. 2021 की बात कर रहा हूँ. तुम्हारी तो 2022 की है. तुम्हारी 2022 की टाइम पे ही होगी एंड शायद मई में होगी if possible. शायद. I don't know about it now. Still not clear with it. Not clear. So you can't take my words properly in that case. Okay, but see to that whatever you do it students do it properly. मेरे हिसाब तो JEE के ऊपर ही ज़्यादा concentrate करो. उसके अंदर bang on to high percentile.
okay, so that you can get good admissions into your अगर तुम्हें बाद में इंजीनियरिंग के लिए भी जाना है, सिंपल बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी बनना है, तो उसके लिए तुम्हें वॉकिंग एडमिशन मिल सकता है students. Always you should, but focus yourself for higher level students, so that will be better. NEET का पेपर भी टफ आया. This is the first time the students were saying it in the entire part of it. NEET was the toughest this time. Few of them found out physics tough, few of them found out chemistry tough, few of them found out both tough. You don't know what exactly is to be done. Okay, students, now let's go for galvanometer part of it. Students, galvanometer, what exactly we consider as galvanometer is a device which is used to detect weak or small female currents. उससे हमें ammeter और voltmeter मिल रहा था. So हम अभी बात की बात, अभी तुम्हें 4 अटेम्प्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलेंगे. Okay, come back to galvanometer, students. अगर मैं galvanometer के बारे में बात करूं students, तो galvanometer is a current measuring or voltage measuring instrument can be considered ammeter and voltmeter. लेकिन ये working of galvanometer कैसा था students? अगर तुम्हें मालूम है तो शायद मैंने lamp and scale method बताया होगा. galvanometer में है क्या students? ध्यान से सुनना. galvanometer है क्या? galvanometer के अंदर students there is a knot. See how exactly it works. South, these are the field magnets. Over here, students, there was an armature coil. Students, there was an armature coil, and these are the turnings. These are the windings of the armature coil. Students, ये सारे windings है. फिर यहाँ पे एक spring action है. ये तुम्हारा pointer है. Students, sorry. This is a spring action. This wire is then pivoted down under inside a groove. यहाँ पे तुम्हारा दूसरा जो end है, that has been connected to a rigid support. Okay, and that is connected to a suitable potential difference. ये तुम्हारा सिंपल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. ये तुम्हारा हुआ स्केल. इसके ऊपर तुम्हारे डिविजन्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लाइक दैट. इन देखो एक सिंपल टाइम का अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर में. तो यहाँ पे भी क्या है सर? यहाँ पे भी तुम्हारा आर्मेचर कॉइल ABCD है. क्या यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है? यहाँ से नॉर्थ टू साउथ जा रही है. तो सर यहाँ पे भी नेट फोर्स नेट कपल होगा. यस. तो यहाँ पे भी टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? यानी कपल का फॉर्मूला क्या होगा? सर कपल का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू व्हाट? NIAB sin theta. ऑफ कोर्स न्यूटन मीटर. यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स. N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. ये देखो नंबर ऑफ टर्न्स आ गया. I का मतलब क्या है सर? आप ये कनेक्ट करोगे सॉकेट से, यहाँ से करंट फ्लो होगा. ए का मतलब क्या है सर? अगर मैं इसको लेंथ ले लूं और इसको मैं ब्रेथ ले लूं, तो व्हाट एक्चुअली एरिया विल बी? ये कौन सा एरिया स्टूडेंट्स? ये फेस एरिया है. फेस एरिया. तो फेस एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. व्हाट इज बी? बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये बी तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है. कैसे यूनिफॉर्म है? सारे पैरेलल है. ऑल दिस आर पैरेलल, ऑल दिस आर पैरेलल, ऑल दिस आर पैरेलल. ऐसा क्या? दैट इज यूनिफॉर्म we consider in this case. Then what exactly consider theta? We consider theta as the angle between what? Angle between the direction of current. We consider the external magnetic field. ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है. स्टूडेंट्स अभी अगर मैं करंट को फ्लो करता हूँ, ध्यान से देखना, तो करंट ऐसे जा रहा है. ध्यान से देखना, करंट यहाँ पे आया, ये करंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा. ये सारे आर्मेचर है. ये करंट ऐसे जाएगा, वापस ये करंट ऐसा आया और सर्किट कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा. That means is the arm AB going to experience force? Why not? Fleming's left hand rule. Field, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. फोर्स किस तरफ जाएगा सर? इसको ये पूरे आर्मेचर को एक अंदर की तरफ फोर्स मिलेगा, ये पूरे आर्मेचर को बाहर की तरफ फोर्स मिलेगा. तो यस, देयर इज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन टू इट. उससे होगा क्या? रोटेट होगा. एवरीबॉडी से केयरफुली, ये पूरा सिस्टम रोटेट होगा. जैसे जैसे ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ेगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ेगा, कैन आई से the pointer over here will start goes on deviating. है ना? पहले जब भी करंट नहीं होगा तो पॉइंटर कहाँ पे होगा? 0 पे होगा. अगर तुमने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा दिया तो व्हाट हैपेंस? द वैल्यू ऑफ थीटा विल इंक्रीज.
यानी theta is proportional to I. Theta is proportional to I. Theta is proportional to current, we can consider. Why not? We can consider yes, theta is proportional to current. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टाइप के टॉर्क होते हैं, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक होगा रिस्टोरिंग टॉर्क. एवरीबडी प्लीज लिसन केयरफुली. ये जो टॉर्क है वो कौन सा होगा, ये कौन सा टॉर्क होगा सर, ये टॉर्क आर्मेचर कॉइल को रोटेट करा रहा है. आर्मेचर कॉइल अगर रोटेट होगा तो पॉइंटर अपना डिविएशन करेगा. यानी इस टॉर्क को मैं क्या नाम दूंगा, इस टॉर्क को मैं नाम दूंगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड होता है. जितना तुमने करंट बढ़ा दिया उतना तुम्हारा डिफ्लेक्शन बढ़ता रहेगा. थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई. नाउ ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्या किया है, करंट मैंने भेजा है लेकिन करंट स्टेडी रखा. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, करंट स्टेडी रखा तो हुआ क्या है, जैसे जैसे पॉइंटर रोटेट हुआ और एक पोजीशन पे पॉइंटर रेस्ट पे है, what happens to the spring inside? What happens to the spring? The spring undergoes a compression. That means for every deflecting torque, there will be a restoring torque. जैसे मैं स्विच ऑफ करूं, सपोज अगर मैंने यहाँ पे की है, सपोज मैं की को बाहर निकाल दूं, अगर मैं की को बाहर निकाल दूंगा तो करंट क्या होगा, हेलो करंट क्या हो जाएगा सर, करंट विल बी ब्रॉट टू जीरो. जैसे करंट विल बी ब्रॉट टू जीरो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू द पॉइंटर, द पॉइंटर विल कम बैक टू जीरो. कौन लेके आएगा, द रिस्टोरिंग टॉर्क इन द स्प्रिंग एक्शन, एंड दैट डिपेंड्स ऑन टू द प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू इट. यानी to every deflecting torque there has to be a restoring torque, and restoring torque is directly proportional to theta. जितना तुम्हारा थीटा बढ़ेगा उतना वो ज्यादा रिस्टोर हो सकता है. तो समझ में आना स्टूडेंट्स, जितना थीटा बढ़ेगा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ सकता है. व्हाई नॉट? If I remove the symbol of proportionality, so what is a restoring torque? So restoring torque is equal to K into theta. What does K stands for? K stands for constant. What exactly does this stand? This K stands for, so this is called as torsional constant. Torque per unit twist. जैसे कि स्प्रिंग ऑसिलेटर में रिस्टोरिंग फोर्स को क्या बोलते थे, नेगेटिव kx. हाँ स्टूडेंट्स, एसएचएम में पढ़ा कि नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव kx, पढ़ा कि नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स एसएचएम में. हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर. रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये के क्या है, व्हाट डज के स्टैंड्स फॉर, के भी तो कांस्टेंट है वहां पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग. सेम थिंग यहाँ पे के क्या है, के भी तो कांस्टेंट है. आई कैन कंसीडर एज अ कांस्टेंट भी कंसीडर, जिसको मैं क्या नाम दूंगा, के इज कॉल्ड एज torsional constant, and that depends on the material of the fiber which is connected. रिजिड सपोर्ट को एक फाइबर कनेक्टेड है, फिर नीचे स्प्रिंग एक्शन है, तो उसके ऊपर डिपेंड होगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा. यानी कितने टाइप का टॉर्क लग रहा है, दो लग रहा है. ये टॉर्क क्या कर रहा है, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये टॉर्क क्या कर रहा है, आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराता है. जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल रोटेट होगा पॉइंटर मूव होना शुरू करेगा. अगर सपोज करंट स्टेडी है तो उस टाइम पे क्या हुआ, करंट स्टेडी तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे हुआ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. That means my deflecting torque is equal to restoring torque, equal in magnitude and opposite in direction. Deflecting torque अगर तुम्हारा restoring torque से match होता है, what happens to system? The system remains in equilibrium. पॉइंटर ना ही जीरो पे जा रहा है, पॉइंटर ना ही आगे जा रहा है, क्योंकि करंट तुमने स्टडी रखा है. स्टूडेंट्स, अगर मैं और करंट बढ़ाऊंगा तो तुम्हारा पॉइंटर आगे जाएगा ना, लेकिन अभी पॉइंटर उधर का उधर ही है. उसका मतलब एक कांस्टेंट करंट जा रहा है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों मैच अप हो गए. ये क्या हुआ, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हो गया. समेशन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. What you've got it. What is the formula for deflecting torque? The deflecting torque is number of turns.
number of turns, current flowing through a armature coil, A, length into breadth, face area of the armature coil, B, external magnetic field. Is that clear? Since the torque is maximum, theta, I'll take it as 90 degrees. See the length of the conductor connection 90 degree है, तो theta 90 है, तो torque maximum हुआ, deflecting torque maximum है. What is the restoring torque and magnitude? K theta. देखो दोनों equate हो गया. Can I take the theta as subject? Can I take theta as a subject? So what exactly theta will be? What is theta? NIAB upon K. Then theta is equal to what? NIAB upon K. What does N stands for? Number of turns जो constant रहेगा throughout the experiment. What does A stands for? Face area of armature coil जो constant रहेगा throughout the experiment. What does B stands for? External magnetic field, north south magnet, वो तो तुम निकाल के replace नहीं करने वाले हो, तो वो भी constant रहेगा. K, सर ये material of the fiber जो तुमने rigid end को connect किया, फिर वहां से तुम्हारा current flow हो रहा है, देखो ये rigid end से connect किया है, तो पूरा highly elastic है, तो material के ऊपर depend है, वो भी change नहीं करोगे तो constant है. अरे हाँ सर, theta is equal to NIAB upon K. N is constant, A is constant, B is constant, K is constant. That means theta is proportional to R. Is this clear? And that becomes your concept for the galvanometer. जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तुम्हारा थीटा बढ़ेगा, जैसे करंट कम होगा थीटा. अभी सपोज मैं स्विच ऑफ कर दूं, फिर मैं स्विच ऑफ कर दूं, करंट जीरो हो जाएगा, थीटा विल बी ब्रॉट टू जीरो. Is this clear for the concept of galvanometer, students? Yes, sir. Okay, so please do keep in mind, students, there are two kinds of torque acting in a moving coil galvanometer. इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? ये है MCG. इसको क्या बोलेगे तुम? ये galvanometer का नाम क्या है? MCG. MCG का मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नहीं, इट्स अ मूविंग कॉइल galvanometer. तो यहाँ पे कौन से टाइप के टॉर्क्स हैं? There are two kinds of torques. One is deflecting torque, one is restoring torque. Deflecting torque का फॉर्मूला NIAB sin theta. टॉर्क कभी मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 होगा. रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? एक्चुअली रिस्टोरिंग टॉर्क का करेक्ट फॉर्मूला क्या मालूम है? माइनस के थीटा. जैसे यहाँ पे माइनस आना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी माइनस आएगा. इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज व्हाट इट मींस. लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इससे सिंपली के थीटा. एग्रीड? इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम, कैंसिलेशन में सॉरी कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दिया, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आर. सर बोलो. सर वो कॉन्सेप्ट समझ गया, बट वो जस्ट वो ग्रूव का क्या पर्पस होगा जो नीचे बॉटम ऑफ द सिस्टम में है? ये ग्रूव जस्ट टू रोटेट, रोटेशनल मोशन के लिए. एक एक ओके. एक सिंपल है, अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये सिंपल एक रोटेशनल मोशन का है. ये नीचे एक सपोर्ट दिया है, बीटी शेप का सपोर्ट दिया है प्लीज, और ये सिंपल है, ये सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसको ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है. अगर सपोज ये रॉड को मुझे रोटेट करना है तो मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं यहाँ पे स्टील बॉल्स डाल दूंगा, है ना, राउंड बॉल्स, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा तुम्हारा. और फिर मैं ये तुम्हारा बाहर का एक एंड है जो मैं इसको कनेक्टिंग यानी वो वाला इंसुलेटिंग मटेरियल, लेकिन उसको ऐसे डाल दूंगा. जैसे जैसे करोगे तो ये रोटेट होगा. व्हील चेयर कैसे होता है स्टूडेंट्स, है ना, घर के अंदर व्हील चेयर तुमने देखा व्हील चेयर कैसे होती है? व्हील चेयर का जो रॉड होता है, तुम्हारा व्हील घूमता है ना, तो उसका व्हील देखा है? अगर तुम व्हील देखोगे तो एक रॉड होगा, उस रॉड के आजू बाजू में एक सिलिंड्रिकल गैप होगा, और उस गैप के अंदर स्टूडेंट्स दे पुट स्टील बॉल्स अराउंड, वो स्टील के सर्कुलर बॉल्स डालते हैं, और ये स्टील रॉड होगा, तो फ्रिक्शन इज बीन मिनिमाइज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो रोटेशनल मोशन को इफेक्टिव करने के लिए. ओके सर, समझा. हाँ. वो एक पाइवोटेड एंड आ गया करके अच्छी तरह से रोटेट होगा, क्योंकि उसको रोटेट होना है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा, वापस रिस्टोर होना है, डिफ्लेक्ट करना है, वापस रिस्टोर. जब भी करंट स्विच ऑन करोगे तो पॉइंटर मूव होगा, करंट स्विच ऑफ करोगे तो वापस आएगा. यानी सोच तो, एम्मीटर वोल्ट मीटर का कंसेप्ट क्या है अंदर. देखा कभी सोचा है कि एम्मीटर और वोल्ट मीटर के अंदर ये गैलो, अभी देखो इसको एम्मीटर बनाना है, तो ये गैलोमीटर है. फ्रेंड्स इसको एम्मीटर कैसे बनाओगे? क्या पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में?
ये देखो ये पूरा एक रेजिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर। था ना, मैं फॉर्मूला लेता ना, S इज इक्वल टू G अपॉन N-1, तो ये जो G है वो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरा रेजिस्टेंस आ गया इसका। ये G ये पार्ट है स्टूडेंट्स। अगर इसी के अराउंड मैंने एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, जिसको मैं नाम दे दूंगा शंट, अगर इसी को मैं एक पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा तो वो मेरा एमीटर बन गया, खत्म हो गई बात। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अगर सपोज मैं इसको निकाल दूं, इफ आई रिमूव दिस and to this if I happen to connect a high resistance in series, देखो सीरीज में कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस, वो क्या बन गया, मेरा वोल्ट मीटर बन गया। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। Okay, so please at the end of it do keep in mind in a moving coil galvanometer theta is proportional to I. Is that clear? And this becomes your formula for NIT is with the K theta we consider. Theta का formula in terms of I. What does N stands for? Number of turns. Please A को बूंद मत बनाना. Please don't forget A. A stands for what? Students, A doesn't stands for thickness of wire. Students, A doesn't stands for area of cross section of wire. No. A doesn't stands for area of cross section. Please, A stands for face area. Face area, length of all the wires collectively का length and the breadth. Face area मानी मुखड़ा. प्लीज ये जो वायर में टर्न कर रहा हूँ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, वो मत लेना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम है, आफ्टर 15 डेज 1 मंथ 2 मंथ्स ये एक को भूल जाते हैं, फिर एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते पाई आर स्क्वायर, और जानबूझ के वो रेडियस भी बोलते हैं वहां पे। क्यों? What exactly we consider is they try to they actually they give you the thickness in that case. अगर सपोज मुझे एवरेज चाहिए स्टूडेंट्स, मुझे एवरेज चाहिए, फॉर एग्जांपल ये तो रेक्टेंगल है, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। अगर सपोज यही कॉइल मैंने ऐसे सर्कल में रखा होता, 1 टर्न 2 टर्न्स 3 टर्न्स 4 टर्न्स 500 टर्न्स 1000 टर्न्स 5000 टर्न्स, चलो 5000 टर्न ले लिया, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ये भी तो एक कॉइल हुआ ना स्टूडेंट्स, ये भी तो आर्मेचर कॉइल हुआ ना, लेकिन ये सर्कुलर हुआ। इसका फेस एरिया कैसे लोगे तुम? इसका फेस एरिया कैसे लोगे? तो तुम्हारा ये जो पहला वाला टर्न है और ये जो पीछे वाला वो 5000 टर्न्स होगा, तो एक बंडल फॉर्म होगा। तो हाउ डू यू गो फॉर द स्टूडेंट्स, एवरेज रेडियस? They will give you in this case internal radius, they'll give it to you, and the external radius students, yani small r and capital R students, small r plus capital R divided by 2 will be the average radius, और यहाँ पे जो a आएगा वो पाई आर स्क्वायर, वो रेडियस आएगा फेस एरिया का। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। अगर मैंने बंडल ऑफ वायर्स दिया और वो बंडल ऑफ वायर्स मैंने सर्कल में रखा हुआ है, तो पूरा बंडल मिला मुझे। इंटरनल रेडियस होगा, एक्सटर्नल रेडियस होगा। सपोज इफ आई गिव यू 500 टर्न्स, तो मुझे फेस एरिया चाहिए, तो फेस एरिया के लिए तो मुझे पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। आर आपने बोला सर रेडियस ऑफ द फेस, लेकिन यहाँ पे तो बंडल 500 टर्न्स का है, तो रेडियस क्या लूं? अंदर वाला वायर का रेडियस लूं या बाहर वाला लूं? बिकॉज देयर इज सम थिकनेस, एनुलर रिंग जैसा हो गया वो तो। So how do you find out the radius? Which I've learned it. It's external radius plus internal radius divided by 2. Is that clear? Can I erase this? यस सर। Harshita, are you understanding, Harshita? Yes, sir. Okay.
Excellent. Now let us go for a simple analog. One of the analogs, what we consider from electrostatics, then to magnetism, and then to magnetic effect of electric current. एक analog में pattern create कर रहा हूँ students. This is a kind of a note you can use because they have used a mathematical formula in magnetic effect of electric current के अंदर directly use किया है, लेकिन वो यहाँ से आता है, analog से आता है. Students, अभी what exactly I mean to say is you have learned electrostatics, students. Okay, and I have done it with you all earlier also for electrostatics. Students, if in case if I ask you students, what exactly electric dipole? What will be your answer? Sir, electric dipole we consider as two charges equal in magnitude placed at a finite distance apart from each other results in formation of a dipole. यह है electric dipole. Two charges equal in magnitude and whose center of the charges are at a finite distance. Agar center of charges are at a particular finite distance, we consider that results in a dipole at a distance 2L we consider. For example, water molecule के अंदर हम लोग ने बताया था +2e -2e distance was there between hydrogen and oxygen. ये तुम्हारा dipole हो गया. Agreed. अगर फिर मैंने पूछा what is electric dipole moment? What is electric dipole moment? तो मोमेंट का मतलब क्या है? टर्निंग इफेक्ट. क्या ये डाइपोल टर्न होता है? होता है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग ने पी विद एन आर पढ़ा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है. P is equal to what? Q into 2L. That means it's a magnitude of any one charge into the distance between the two charges. वो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? What is its unit? Coulomb meter. क्या ये वेक्टर है? हाँ सर ये वेक्टर है. What is the direction of electric dipole moment, students? Can anyone tell me the direction? What is the direction of electric dipole moment? It is directed from where to where, students? Tell me. Negative to positive. Absolutely correct. It's -Q to +Q. ये आना जरूरी है. फिर now if I ask you, अगर suppose मैंने ये electric dipole moment को, अगर electric dipole moment को मैंने external electric field में रखा, friends, for example, if I happen to consider, ये तुम्हारा dipole है, ये तुम्हारा positive end है, ये तुम्हारा negative end है, और ये जो तुम्हारा है distance 2L, agreed, ये dipole form हो रहा है. अगर suppose इस dipole को मैंने external electric field में रखा, 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 तो क्या ये डाइपोल रोटेट करेगा? करेगा ना सुन. पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? क्या पढ़ा तुम लोगों ने? सर पॉजिटिव चार्ज विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? Two forces equal in magnitude, opposite in direction, acts at the point we consider. Agreed? So this is one force into perpendicular, that's the torque. What is the angle formed between the dipole and the external? ये देखो ये dipole का line है, ये dipole का line हुआ students, ये dipole moment का line हुआ, ये electric field का direction हुआ, angle is theta, ये theta हुआ. Will there be any torque? Yes, because there is force acting over here. What is the force acting? E is equal to F by Q. So what is F is equal to? Plus Q into E. यहाँ पे क्या होगा? Minus Q into E. देखो force act हो रहा है. So what exactly the formula for torque acting on an electric dipole? तो ये है electric torque we consider. Electric torque will be equal to what? P bar cross E bar. Means what exactly in magnitude? E sin theta. Can I say? Unit is Newton meter. क्या ये clear हुआ students? Hi and now students. Theta is the angle between the electric dipole and the external electric field. ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मेरे साथ में पढ़ा है, वापस तुमने हेमंत सर के साथ में भी किया होगा. Now, अगर तुम्हें टॉर्क मिल गया तो can you find out the work done? Yes sir. Work done in rotating the electric dipole from initial position θ1 to final position θ2. So what exactly your work done will be? So work done is equal to what? P E. What exactly? Cos θ1 minus cos θ2. This is initial and this is final, and this answer will be in Joule.
इंटीग्रेशन से होता है t sin theta into d theta for small amount of work done. t को बाहर निकाल दो. What is the integration of sin theta into d theta minus cos theta? माइनस बाहर आ जाएगा. cos theta तो दो लिमिट्स आ गए, इनिशियल टू फाइनल. जब तुम फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो थीटा टू माइनस थीटा वन आता है फॉर्मूला में, लेकिन मैंने फिर माइनस साइन अंदर ले लिया तो मेरा आंसर आया थीटा वन माइनस थीटा टू. लेकिन ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, थीटा वन इज इनिशियल पोजीशन, मेरे में थीटा टू इज फाइनल पोजीशन है ये. और ये तुम्हारा वर्क का फॉर्मूला हो गया. वर्क डन इज इक्वल टू दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये U क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? PE cos theta 1 minus cos theta 2. ये आंसर जूल में आया. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर. अभी हम इसको लेके हुए हम अभी बार मैग्नेट को स्टूडेंट्स. ये जो बार मैग्नेट का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, और वो आइडेंटिटी का जाता है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली सेम. अभी तो इसी को मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना. सपोज इफ आई हैपन टू गो फॉर नोट, अगर मैंने पूछा स्टूडेंट व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, उसका मतलब क्या? So two magnets equal in magnitude, opposite in nature. यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है. नॉर्थ का स्ट्रेंथ प्लस एम है, साउथ का माइनस एम है. स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल एम है इसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ. व्हाट इज दिस कॉल्ड? पोल स्ट्रेंथ. यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर. North has the strength of plus m, south has the strength of minus m. It goes analog with minus. ये देखो ना, ये माइनस की और प्लस की कैसे है, वैसे ही इसको साउथ को हम लोग ने माइनस पकड़ा है, नॉर्थ को प्लस पकड़ा है. ये एनालॉग, तभी जाके ये चैप्टर इसके पीछे आता है. स्टूडेंट्स हेमंत सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट किया, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा दिया. अभी चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ाएंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, है ना. जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा ही गो ऑन टू मैग्नेटिज्म, क्योंकि उसके पहले उन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा दिया. ये सारे फील्ड से रिलेटेड है. ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड आएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वापस यही भी चीज बोलेंगे, पूछेंगे तुम्हें. बच्चों तुम लोगों को पता है प्रीवियस हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, सेम आंसर्स होंगे. इसका भी कंसेप्ट सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अट्रैक्टिव और रिपल्शन है, यहाँ पे भी अट्रैक्टिव और रिपल्शन है. ग्रेविटेशनल फील्ड में सिर्फ अट्रैक्शन है. ये तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ हुआ. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? हाँ सर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 आ गया. ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल्स. इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, सॉरी इसको हम बोलते हैं एक्सिस. और उसी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लूं तो उसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेटर. ना ये मैग्नेटिक डाइपोल ना. सपोज अगर मैं पूछा व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कैपिटल M स्टूडेंट्स. What's the formula for capital M? This is product of any one charge into distance between the two charges. Students, OB is product of any one strength. Students, जो नॉर्थ का स्ट्रेंथ होगा वही साउथ का भी स्ट्रेंथ है, लेकिन सिर्फ नेचर अलग अलग है. वैसे ही जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज वहां पे, लेकिन नेचर ऑपोजिट है, प्लस और माइनस. तो व्हाट एग्जैक्टली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? Students, magnetic dipole moment is defined as a product of strength of any one pole. Strength of any one pole into the distance between the two poles, into the distance between the two charges, into the distance between the two poles. Is this a vector? Is this a vector? Yes, it's a vector. Unit, coulomb meter. Unit, unit. सर इसका यूनिट आपने लिखा है एम्पियर मीटर. स्ट्रेंथ का डिस्टेंस मीटर है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हुआ. क्या ये क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ बार मैग्नेट. एग्रीड. ये तुम्हारा एक बार मैग्नेट है. जो तुम मैग्नेट तुम्हें लैब में मिलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. तो एम्पियर मीटर स्क्वायर. इसके रिलेटेड अभी देखो नेक्स्ट कंसेप्ट. अभी ये निकाल दो, डाल दो मैग्नेट को वहां पे. सेम डायग्राम स्टूडेंट्स, अगर मैं सेम डायग्राम ड्रॉ करूँ तो देखो ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ. अगर सपोज मैंने यहाँ पे नॉर्थ लिया, यहाँ पे मैंने साउथ लिया, तो कहना से फील्ड लाइंस आर गोइंग टू गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ.
नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये कौन सी फील्ड हुई? मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुम्हारा नॉर्थ और साउथ डिफ्लेक्ट होगा? हाँ सर। क्यों नहीं होगा? देखो ना, इसके जैसे ही होगा। क्या नॉर्थ को फोर्स मिलेगा? हाँ सर, देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन टू इट। साउथ को फोर्स मिलेगा? हाँ सर, साउथ नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा, तो क्या दोनों को फोर्स मिलेगा? यस, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल? स्टूडेंट्स, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिज्म इज व्हाट? ये पी क्रॉस ये, तो यहाँ पे क्या होगा? एम बार क्रॉस पी बार। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंस इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, so can I say mp sin theta? What is theta? Angle between direction of magnetic dipole moment, which is from south to north, and the external magnetic field angle is theta. What is the unit we consider? Newton meter. क्या ये clear हुआ students? Students, क्या ये part clear हुआ? यहाँ पे टॉर्क पी क्रॉस है, यहाँ पे टॉर्क एम क्रॉस भी हुआ, कुछ फर्क नहीं, सेम ही है। लेकिन ये बार मैग्नेट के बारे में स्टूडेंट्स ना। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इन ऑर्डर टू रोटेट पी, तो यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा स्टूडेंट्स। वर्क डन क्या होगा? एम बी। यहाँ पे मैं लिखूंगा cos थीटा 1 minus cos थीटा 2। दिस आंसर बीइंग जूल। Does this work done get stored into potential energy? Yes, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स, ये होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये ध्यान में रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट्स द फार्मूला ओवर हियर आल्सो? mb cos थीटा 1 minus cos थीटा 2। ये हुआ तुम्हारा इनिशियल पोजीशन, ये हुआ तुम्हारा फाइनल पोजीशन। क्या ये हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। I need space students, okay? So I have to erase। अभी देखो, कोई अगर मुझे पूछेगा सर वर्क डन का कैसे आता है, आंसर सुना, मैं ये वर्क डन का वापस फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं डिराइव करता हूँ, ओके? आंसर देंगे स्टूडेंट्स। सपोज अगर मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, चलो इसका वाला डेरिवेशन कर दो, ये तो तुमने किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सपोज अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो वर्क डन इज आल्सो वेरी स्मॉल। So what's the formula for work done? So work done will be equal to mb sin theta, because work done is equal to what? Force, torque into d theta आएगा, है ना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो इंटू डी थीटा आ जाएगा। टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एम बी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा? माइनस कॉस थीटा। इनिशियल पोजीशन इज थीटा 1, फाइनल पोजीशन इज थीटा 2। लिमिट्स आ गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? एम बी, ये मैंने माइनस साइन बाहर निकाल देता हूँ, ब्रैकेट में क्या आएगा? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या आंसर आ रहा है? देखो, एम बी प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो cos थीटा 1 आगे आ जाएगा, cos थीटा 2 पीछे आ जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला मैच हो रहा है। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंस ये रोटेट होता है तो मुझे रोटेशनल फोर्स के बारे में बात करना है। डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क डन इज आल्सो वेरी स्मॉल, सो dw इज इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग ने लिख दिया, mp sin थीटा इनटू d थीटा। इंटीग्रेट कर दो। स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? हाँ सर। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से गया, ये तुम्हारा मैग्नेटिज्म के हिसाब से गया। लेकिन बार मैग्नेट, हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? आर वी स्पीकिंग अबाउट प्योर मैग्नेट्स? Students, are we speaking about bar magnets, or we were speaking about magnetism due to current flowing in the conductor? Students, what I was telling you, it was magnetism set up in a coil due to what? Current in a coil, isn't it? हाँ या ना? Magnetic effect of electric current. तो हमारा आंसर कैसे होगा? अभी हम वो देखते हैं। अब मेरे पास स्पेस नहीं तो यहाँ पे थर्ड कॉलम लिखता था, लेकिन वो इन दोनों से मैच होगा। नहीं सर, ड्रॉप कर दो, हो गया, लिख गया। Can I erase this? यस सर।
तो जैसे तुम लोग ने यहाँ पे पता है डाइपोल का E along the axis, E along the equator, वैसे यहाँ पे तुम मैग्नेट के अंदर भी B along the axis, B along the equator, potential at any arbitrary position for a dipole, potential at an arbitrary position for a magnetic dipole, तुम निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिया वैसे यहाँ पे लिया। यानी स्टूडेंट्स जब भी सर मैग्नेटिज्म करेंगे ना, स्टूडेंट्स मैग्नेटिज्म और हेमंत सर करेंगे, उसके पहले स्टूडेंट्स एक दफे ये देखना सर ने जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बोला ना स्टूडेंट्स, उसको बहुत ध्यान से करना, एक्सेप्ट कैपेसिटेंस। उसके पहले का जितना है वो पूरा ध्यान से उसको एक दफे रिवाइज करना, फिर उनके लेक्चर्स में बैठना मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। सी योर थिंग्स विल बिकम, तुम्हारा 5 फोल्ड 7 फोल्ड्स बढ़ जाएगा तुम्हारा कैलिबर, because there is a lot of resemblance. Okay, students. Now, suppose if I happen to go for a current carrying coil, we consider this in capacitance. Suppose if I happen to go for current in a coil. Think as if this is in the first case, students, this is positive potential, negative potential. This is positive, negative. Supply is direct current. Supply is direct current. वो भी also इसको हम लेते हैं positive और ये negative. Supply is direct current. Agreed. So now what exactly consider when current is set to flow through a conductor, students? What exactly produces? It produces a magnetic field around it, students. There is a magnetic field. Every current carrying conductor will have a magnetic field. Okay. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो देखो तुम्हारा करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन कर लूंगा। यहाँ पे कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ पे भी देखो ये प्लेन ऑफ द कॉइल मैंने ऐसा रखा है, ये ए बी सी डी, ये फेस ऑफ द कॉइल। तो इस करंट इस तरह जा रहा है, दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग। ओके, दिस इज द फेस ऑफ द कॉइल। To make it more easier, students listen carefully. अगर suppose मैं straight conductor लूँ, चांस लेना students, अगर मैं straight conductor लूँ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो how is the magnetic field? फिर यहाँ पे सारे क्रॉसेस आएंगे, तो यहाँ पे सारे डॉट्स आएंगे। अगर मैंने करंट नीचे की तरफ किया तो यहाँ पे सारे क्रॉसेस आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे सारे डॉट्स आ जाएंगे, यहाँ पे सारे क्रॉसेस आ जाएंगे। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्रॉस और डॉट, क्रॉस का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर दोनों में सेम क्यों है? ओह सॉरी, सेम नहीं। हाँ सर उल्टा होगा ना। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये देखो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और ये बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड थंब तो ये अंदर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे क्रॉसेस और ये तुम्हारा पाथ। एग्रीड? यस सर। Okay. Now suppose students, suppose if I happen to give you a cardboard, if I give you a cardboard, and onto this cardboard, suppose if I give you two current carrying conductors, okay. In the first case, current is of same magnitude and they are moving in the same direction, students. अगर मैंने यहाँ पे कंपास नीडल रखा exactly midway,
So can you find out B resultant at point P when the current is moving in the same direction? And further, this is my first question for it. वही second question के लिए B resultant at point P when direction of current is opposite. P is midway. क्या ये दोनों का आंसर दे सकते हो तुम पहले? It's a simple question I'm asking you, students. Two straight current carrying conductors are made to pass through a cardboard. My question to you is, I wanted to find out the resultant magnetic field midway, okay, between the line joining the two straight conductors, but current in this case is in the same direction of same magnitude. Likewise, current of same magnitude, but in opposite direction at same point P. Anybody students? Kunal has given his answer. What about others? Kunal Patel has given the answer. How about the rest of them? Anybody else, students? Diti has given the answer. Diti, your answer is wrong. Even Kunal is also wrong. Both of you are wrong. ध्यान से सोचो ना, तुम घाई क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा resultant magnetic field intensity at midpoint P of the line joining the two current carrying conductors of equal magnitude in same direction and of unequal magnitude in opposite direction. यानी अगर मैं यहाँ पे कंपास नीडल रखूंगा तो होगा क्या? रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन क्या होगा कंपास नीडल में? और यहाँ पे मैंने कंपास नीडल रखा तो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन क्या होगा? क्या क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स सबको? Students, is the question clear with all of you all? हाँ सर समझा हाँ. Now, Vilal has given some different answer. Niti, what is your answer now? You want to change? You want to answer again? Anybody else? Kshitij. Absolutely correct, Kshitij. Kunal is now correct. Kshitij is also correct. Niti, what about you? Come on, rest of you all, Priyal, Aditi, Josh, Chanvi, Sujal, Chirita, Aishwarya, Chirag, Diti, Ashita, Tanshu,
China, I don't know, China, what are you doing? You're not answering nowadays. Priya, Rashid, Rishi, why you're keeping silent? Rishi, answer though. Sanya, Tej. Kshitish is correct and Kunal is now correct. Anybody else? Or shall I give the answers to it? Shall we discuss? Sanya, my question is, when the current is moving the same direction in two parallel conductors, what is the resultant magnetic field intensity midway at point P? Okay, And sir. in the opposite direction, what is the resultant magnetic field intensity? If it's in the opposite direction. Chirag, very good, Chirag. Now you have answered. Chirag, second answer. Okay, students, I'll give you the answer. Absolutely correct. लेकिन ये 2B2 क्या लिखा है? Students, listen carefully. Resultant magnetic field intensity क्या होगा students? Very easy. अगर तुम ये कंडक्टर देखते हो स्टूडेंट, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। राइट हैंड थंब रूल में तो कहना से अगर मैं कंपास नीडल यहाँ पे रखूंगा तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कहने से नीडल मेरी इस तरफ आएगी, है ना, बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि ये मेरे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, है ना, ऐसा आएगा। क्या ये क्लियर हुआ टेंजेंट? हाँ स्टूडेंट्स, बट नाउ इफ आई हैव टू गो फॉर दिस thumb, see my field is going to go inside, my field is going to go inside. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये हुआ तुम्हारा करंट, लुक ओवर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर की तरफ चली गई, है ना, इट्स लाइक दिस। यानी हुआ क्या स्टूडेंट्स? एट पॉइंट पी स्टूडेंट्स देयर आर टू फील्ड्स एक्टिंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मैं ये बी लेता हूं तो ये भी तो बी होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। यानी इसके लिए व्हाट इज माय रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? जीरो, जीरो वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसके लिए क्या होगा? अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ स्टूडेंट से, देखो इसके लिए क्या होगा? सिर्फ ये ऐसे जा रहा है, since the current are in the opposite direction students, it's in the opposite direction students. So in this case, how exactly the field is going inside over here? इसके लिए भी फील्ड किस तरफ जा रही है? अंदर की तरफ भी जा रही है, तो फील्ड ऐड हो गई है। व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? ट्वाइस बी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay,
So now students, in this case, the resultant field is 0, यहाँ पे resultant field. Now what are we trying to do, students? We are trying to understand that suppose if I make a current to flow in the other, suppose यही चीज, ध्यान से सुनना, यही डायग्राम को अगर मैं पूरा ये डायग्राम को सोचो, अगर मैं पूरा ऐसा कॉपर वायर बना देता हूँ, एक क्लोज वायर बना देता हूँ, तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जाएगा, है ना? यही पैटर्न यहाँ पे आ गया। तो देखो करंट ऊपर जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्लोज कॉइल हो गया, ये भी क्लोज कॉइल हो गया, ये भी क्लोज कॉइल होगा। तो नाउ कैन आई यूज सिंपल क्लॉक रूल, स्टूडेंट्स, कैन आई यूज सिंपल क्लॉक रूल टू गेट द magnetic field at the face of the coil? If the current is flowing, students, if the current is flowing in the anti-clockwise direction, the polarity at the face of the coil will be not, because the field is outwards. The field is outwards. But if in case of the current is clockwise direction, the polarity at the face of the coil will be south. The field is inwards. यानी each phase has a dipole, students. Each phase has a dipole. अगर इस तरफ नॉर्थ है तो पीछे की तरफ क्या है? साउथ होगा. अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ होगा. स्टूडेंट्स, फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? सर यहाँ पे फील्ड लाइंस जाएगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ये देखो ऐसा होगा डायरेक्शन. दिस इज द फील्ड लाइंस. दिस आर द फील्ड लाइंस. यहाँ पे किस तरफ जाएगी? सर दीज आर द फील्ड लाइंस. Is this clear? Friends, are you getting this? So a current carrying circular coil, does it has a magnetic dipole? Yes, sir, it has a magnetic dipole. It has a magnetic dipole. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, स्टेट कंडक्टर के अंदर जब हम राइट एंड थंब रूल यूज करते हैं, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, स्टेट कंडक्टर के अंदर अगर मैं राइट एंड थंब रूल यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, तो थंब क्या दिखाता है? करंट. कर्ल फिंगर्स क्या दिखा रहा था? मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, इसी का ही कन्वर्स ले लो, राइट हैंड पाम रूल. स्टूडेंट्स, अगर if I take current as circular, how's the field? How's the thumb coming? Outwards. When the current is anti-clockwise, my field is outwards. Students, जब भी तुम thumb को देखोगे, तो do you see the tip of the thumb or the tail of the thumb? See over here, you'll see the tip. Tip का मतलब north. अभी देखो इसके लिए मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ. See the direction of current over here. This is anti-clockwise. ये clockwise है students. It's clockwise. It's clockwise. See my thumb. Is my thumb going inside? Did I show a cross over here? Yes, it's going inside. Inside means, do you see the tip of the thumb or the tail of the thumb? You're watching the tail of the thumb. यानी ये साउथ पोल होगा. इसी का ऑपोजिट, यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर, स्टूडेंट स्ट्रेट कंडक्टर करंट दिखाता था, कर्ल फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है. यहाँ पे क्या हुआ? मेरा कर्ल फिंगर्स दिखाता है करंट, थंब दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड. क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स, हाउ टू अंडरस्टैंड बोथ दीज कंसेप्ट्स? तो ये तुम्हारा कंसेप्ट क्या आता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस कंसेप्ट टू कंसीडर? ईच फेस ऑफ a current carrying closed coil, each face of a current carrying coil has a magnetic dipole. Since each face of a current carrying closed coil has a magnetic dipole, will have a north and south. क्या ये क्लियर हुआ? इसको हम कैसे रिमेम्बर करेंगे? क्लॉक रूल. अगर देखो तुम नॉर्थ को लिखो स्टूडेंट, देखो नॉर्थ को कैसे लिखोगे? ऐसे एन लिखोगे ना, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा था. देखो ये देखो, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा है, तो पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी. अगर तुम साउथ लिखोगे ना, तो देखो साउथ ऐसे लिखते हैं. ये हुआ तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोलैरिटी विल बी साउथ. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ व्हाई डू आई डू दिस? क्योंकि हम बात कर रहे थे प्रीवियस कंसेप्ट के साथ में. अभी ये सोचो कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये करंट फ्लो हो रहा है. सपोज अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ये नॉर्थ पोल हुआ, पीछे साउथ पोल हुआ.
सपोज अगर मैंने इसको रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा? सपोज अगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ रखा और यहाँ पे साउथ रखा तो क्या होगा? ये पूरा रोटेट होगा कि नहीं होगा? Will it deviate? Yes. They will get a force. They will be getting some force in that case. Agreed. So there will be some torque acting in this case. What exactly the formula for torque we consider is? Yes, there is a torque acting. जब भी current carrying circular coil के अंदर there is a torque acting. What's the formula for torque? What is the formula for torque? NIAB sin theta. क्या ये clear हुआ students? हाँ Students, सर, a current carrying circular coil अगर suppose मैंने external magnetic field के अंदर रख दिया students, तो am I getting a torque? Why not? ये है torque. Students, ये है torque acting onto, अगर ये magnetic field में बताता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा magnetic field है, external magnetic field is acting and there's a current. तो NIB, अभी ध्यान से सुनो students, ध्यान से सुनना. What exactly magnetic dipole moment? तो तुम क्या बोलोगे? इसका यूनिट क्या था students? What is the unit? Ampere meter square. याद आ रहा है? तो हाँ कहने से ये हुआ एम्पियर, ये हुआ मीटर स्क्वायर. व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर टॉर्क? N into NIA. NIA को मैं क्या लिखूंगा? टोटल M into B sin theta. So what's the formula for torque acting on a current carrying circular coil, students? Torque acting on a circular current carrying coil will be equal to N bar cross B bar. That's a cross product. Where theta is the angle between direction of dipole moment and external magnetic field. ये देखो dipole moment किस तरफ जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है वो तुम्हें देखना है. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन. क्या ये एनालॉग समझ में आया स्टूडेंट्स? मैंने yes मैंने sir. यहाँ पे एनालॉग कैसे लिया है? यूनिट के हिसाब से लिया है स्टूडेंट्स. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो स्टूडेंट्स, तो बार मैग्नेट के लिए ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, बार मैग्नेट के लिए ये नॉर्थ प्लस एम था, साउथ माइनस एम था. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या था? एम्पियर मीटर. ये मैंने बताया था. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? m into 12. इसका यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये मैंने डाल दिया था फॉर्मूला, एम्पियर मीटर. यानी मैंने इसको इससे कंपेयर किया. ये देखो यहाँ पे मैंने इसका यूनिट डाल दिया, फिर ये यूनिट को मैं इस फॉर्मूला से मैंने कंपेयर किया, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर दिया. यानी कैपिटल एम है क्या स्टूडेंट्स? व्हाट इज कैपिटल एम फॉर करंट इन अ सर्कुलर कॉइल? NIA यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओह, यानी स्टूडेंट्स बोलेगा सर यानी कैपिटल एम के दो फॉर्मूलाज हैं. हाँ स्टूडेंट्स, दो फॉर्मूला है. अगर तुम बार मैग्नेट के प्रॉब्लम्स करते हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम सिर्फ बार मैग्नेट के प्रॉब्लम्स करते हो तो वहां पे फॉर्मूला होगा m into 12. m into 12. लेकिन अगर तुम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से करोगे तो NIA ampere meter square, ampere meter square. What does N stands for? Number of turns. What does I stands for? Current flowing into it. What does A stands for? Face area of the coil. So what does this NIA stands for? Capital M. Capital M for current carrying coil. What does B stands for? External magnetic field. What does theta stands for? Angle between the magnetic dipole moment and external magnetic field. And that is MB sin theta. So it's a cross product. And the unit is Newton meter. Yeah, Yes sir, clear. is it clear? Yes sir. इसी का हम लोग को वर्क में भी आंसर मिल सकता है. टॉर्क मैंने निकाल दिया, तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वही तुम्हारा फॉर्मूला आएगा. क्या होगा? MB cos theta 1 minus cos, लेकिन वो cos theta किसके हिसाब से होगा? प्लेन ऑफ द कॉइल के हिसाब से होगा. When I use integration of sin theta, I'll get cos theta, and cos theta we consider is the angle between the plane of the coil and the external magnet. Is that clear? This is what a student should keep in mind. Can I erase the students completely?
इरेज कर दो स्टूडेंट्स। हाँ सर। Mains results are out, students. It was initially only for the top contenders, but now everyone has got the results. They're already out. Just half an hour ago. Okay, students. Now the next concept. Next concept, students, goes with your By-Ajit law, students. ये जो By-Ajit law है, students, is actually speaks about a concept related to जैसे Gauss's theorem होता है, वो आगे की तरफ आएगा Ampere's circuital law. लेकिन ये By-Ajit law, we are going to use it to find out magnetic field for any shape conductor, students. और ये एक शॉर्ट डेरिवेशन स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, लेकिन वो डेरिवेशंस किसके लिए है? फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड दैट इज ऑन बोथ द साइड्स. सेमी इनफाइनाइट भी है स्टूडेंट्स. Getting it? You can go for an arc of a conductor, we can consider. You can go for a circular coil also. यानी कहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो. ये कैसे रिसेम्बलेंस होता है हमारे स्टूडेंट्स? ये तुम्हारा देखो ना, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर? तो तुमने कैसे लिखा था? E इक्वल टू F बाय Q. F का फॉर्मूला डाल दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का. आजकल तो वैसे तुम्हें फॉर्मूला मिला था. वैसे यहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूलाज निकालना है फॉर डिफरेंट शेप कंडक्टर, स्टूडेंट्स, एंड दैट गोज विद By-Ajit law. So that By-Ajit law is a concept where we say that, answers in the students, if I happen to go for any shape conductor, students, okay, and if I happen to go for any small element of the wire, DL, okay, the current flowing through this element I'll consider will be capital I. Listen carefully, students. What exactly Biot and Savit, these are two physicists who were mathematicians of this, they stated a law कि अगर सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑफ एनी शेप, और अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, डिस्टेंस R, which is a position vector we consider from any shape conductor, look at the angle of this particular shape conductor with point P, theta. Then students, your formula is, your magnetic field intensity is given by the formula mu naught upon 4 pi I dl sine theta upon r square. So this is your formula for magnetic field intensity with respect to small element dl. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, देखो करंट कैसे जा रहा है? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. एवरीबडी लिसन केयरफुली. करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो कहने से भाई राइट हैंड स्क्रू रूल, मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. हाँ स्टूडेंट्स, करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा दूँ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा दूँ स्टूडेंट्स, तो ये हुआ मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? Is this direction very large or very small? Very small. क्योंकि हम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये dV किसके ऊपर डिपेंड होता है? dV किसके ऊपर डिपेंड होगा? dV डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्ट वेरिएशन. dV किसके ऊपर डिपेंड होगा? लेंथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ. dV किसके ऊपर डिपेंड होगा? थीटा. अगर थीटा 90 होगा तो dV मैक्सिमम होगा. dV किसके ऊपर डिपेंड होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. अगर तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या होगा? फील्ड कम होगी. डिस्टेंस कम होगा तो फील्ड बढ़ेगी. तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइट एलिमेंट यूजिंग By-Ajit.
और ये फॉर्मूला कैसे आता है स्टूडेंट्स? Simply by factors. So magnetic field intensity, the answer is not students. Magnetic field intensity due to an element length, a small element length, having current I flowing through it, is directly proportional to the magnitude of current flowing through it, is directly proportional to the length of the conductor, inversely proportional to square of the distance between the line joining the conductor and the point. So your formula will be d is equal to mu naught upon 4 pi I dl sine theta upon r square, and the unit will be Weber meter square. Yeah, ये clear हुआ students? हाँ सर. Based on to this, हम आगे derivations करेंगे students. Okay. So next time onwards, when we start with the students, you please tell me कि सर हम लोग ने By-Ajit law का formula सिर्फ derive किया था, अभी हमें आगे derivations उसके applications. Is that clear students? We'll continue. Yes, sir. चलो, bye bye. Bye sir. Thank you sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, most welcome. Thank you so much.